Hi friends, today we are going to do punctuation. Now, punctuation marks are there not just to make the language look more beautiful or make it more difficult to understand. No, punctuation marks are there for you to pause, and you are clearly told how much to pause where. Which punctuation mark requires you to pause less and which requires you to pause more. I will write down the punctuation marks here in the order in which I am going to teach you. Listen, the punctuation mark called comma. That is the most difficult and it takes up most of your time to understand it. But understanding of it is very important. Now remember that a punctuation mark is used to help understand this subject matter. The punctuation marks, now not going to write here because I have received complaints that I write here and I stand here so students are not able to see. I'm going to write in the center. Punctuation marks, first of all, is full stop. Have I left out any? Yes. Now, I have written almost all the punctuation marks here except the comma. First of all, we'll take up all these and then in the end, we'll take up the comma. Right? Now, you know what a full stop is. Full stop marks a complete stopping of the sentence. You have to pause there for at least a second so that the other person, the listener, also understands that there is a full stop there. It signifies a complete stoppage of speech. Is that very clear? Now, we are talking of speech. In writing also, it marks the same thing. Now, full stop, that is the main usage of full stop. But full stop is also used in abbreviations. Abbreviations like, let's say, what are abbreviations? Abbreviations are short forms. Like you would say, doctor. Previously, we used to say, Mr. Now, Mr., this has been eliminated. We don't use it anymore. Same for Mrs. But we use it for doctor. Then we use it for I, M, A, W, H, O, U, N. So all these are abbreviations where you use a full stop. Is that clear? Now you also use a full stop in addresses. When you end the address, then also you have to use a full stop. I think that's it for full stops. Now we come to question mark. Question mark, as you know, is a mark of interrogation and is used after the question.
has been said. In place of a full stop, you use a question mark. When you are talking of a question, you are speaking a question. Where did you go? So that's a question. So after that, you put a question mark. Now, I'll come to it later. I'll come to it when we come to inverted commas. Please. Now, what happens is, this is question mark, this is a mark of exclamation. What is an exclamation? Exclamation is a sudden, strong desire to express your emotions. Wow, what a lovely scene this is. So that is an exclamation. And that exclamation ends with an exclamation mark. Instead of full stop, you put an exclamation mark there. Exclamation marks are also used after certain words which express emotions, like hurrah, alas. So there are certain words where you use this. Now, yes, as I was saying, these words, what are these words? These words are called interjections. Interjections are single words which express a sudden emotion. It could be an emotion of happiness, it could be an emotion of sorrow, grief, laughter, anything. So after single words interjections also we use an exclamation mark. Now we come to inverted commas. Now remember that inverted commas are used in direct speech. When you start a direct speech, you open the inverted commas, that is, you use this. When you end the indirect speech, you close it with this comma. Is that right? Now, one more thing that you need to know, that the full stop or question mark comes before you put this inverted comma, right? Remember this, please. See, when you write a sentence, question mark, and this is direct speech. So you don't put a direct speech here. You put the question mark here and put the direct inverted commas here. Is that very clear to you? Any doubts so far? Another thing that you need to know. Another thing that you need to know about inverted commas is that inverted commas must always be used for direct speech. There are certain words we use, let's say French or a Spanish or even a Hindi word for that matter, or a Tamil word in our language. We have to use it. Dosa, I don't know what a dosa is in English. Dosa is a dosa. So when you say dosa or you talk of dosa, so you put single inverted commas. Now where are they? I put them somewhere. Here. These are single inverted commas to specify that this word is different from all the words that have been written before or are being written afterwards or being spoken that way, because spoken is not very valid here. It is for writing. See, here you would write a dosa. So it clearly says that this is a different word, or you can write it in italics, but you don't have, because in writing you don't have italics as such. Your cursive writing is already an italic language. So you have to be careful that this single comma is used either to name a book, to make it clear that this is the name of a book or something particular, which is not common to English. Now, that is the single inverted comma we have done. We have done exclamation mark, we have done inverted commas. Now, we come to semicolon and full colon. Now, semicolon is used for a pause slightly longer than the comma. Semicolon is used for generalization. It is used for when we say we
use oils like linseed oil, kerosene oil, olive oil, and so on. So to generalize this, we know that we are talking of oils. So these are the type of oils that are being used. Therefore, we use a semicolon. A full colon. Now, I need a place to write. Please rub. Start. Yes. Now, I have written here full colon. Remember, I specifically wrote this full colon. So, because it is semi here, the semicolon, I wrote full colon. Actually, the word in English language is colon. So, you can write colon, right? Semicolon and colon, there is a slight difference between them. Semicolon gives you a lesser pause. Full colon gives you a greater pause. Now, as I said before, semicolon, I have told you semicolon, did I? Well, anyway, again. Semicolon connects loosely. I gave you the example of oils, right? That is for semicolon. And full colon is used, colon is used to connect loosely related clauses. I'll give you an example. His crimes were severe. His punishment fatal. See, this is connected with this, but we did not put a conjunction here because these are loosely related clauses. These are called loosely related clauses. His punishment fatal, his crimes were severe. So instead of we put and here, we could have, but instead of that, we put a semicolon. Clear hai ye baat? So we were talking about apostrophe. Apostrophe is used simple. Apostrophe is used to show possession or belonging. It is very simple. I'll come into certain clauses that make it difficult. But first of all, I'm going to tell you what is very simple. Apostrophe is used to show possession or belonging. अब इसमें क्या होता है? Ram's mother. अब ये अपॉस्ट्रोफी लगाया और एस लगाया, ये दर्शाता है कि राम की मां के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है? नेबर्स डॉग. अब ये तो मैंने आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल्स दे दिए जहां पोजेशन शो करने के लिए आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं वो सिंगुलर के दिए हैं, सिंगुलर नाउन. अब अगर हम प्लूरल नाउन का करेंगे तो क्या होता है? देखिए, हम कहें गर्ल्स हॉस्टल, लेडीज शॉप. अब यहां पे अपॉस्ट्रोफी कहां था? यहां पे गर्ल्स है तो गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे नहीं, ये नहीं लगा सकते हम. सो हम क्या करते हैं? हम यहां पे गर्ल्स के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं.
लेडीज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस नहीं एंड करते। तो नाउ अब आप इससे क्या समझे कि जो वर्ड्स एस से एंड करते हैं उसमें हम खाली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी प्लस एस नहीं लगाते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें से देखिए, प्लूरल तो ये हो गया गर्ल्स एंड लेडीज, लेकिन मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। तो मेन में तो एस नहीं आ रहा ना, तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे मेन्स बूट्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहां तक? दूसरी बात, हम अपॉस्ट्रोफी को लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि लिविंग थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफी आप लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप कॉकरोच के लिए यूज कर सकते हैं, सिल्क वर्म के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप चेयर, कंप्यूटर, किताब, कर्टन, इनके लिए आप अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। लैपटॉप्स बैटरी नहीं कह सकते, क्योंकि लैपटॉप पोजेस नहीं कर सकता कोई चीज, कि नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन हम नॉन लिविंग थिंग्स में जो जिन चीजों को गिनते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन्स रेज, सन्स हीट, नेचर्स ब्यूटी, वी ऑल यूज दिस। तो जब हम यहां पे इनके लिखते हैं अ डेज ड्यूटी, डे की पूरे दिन की ड्यूटी है, ड्यूटीज कॉल, डेथ्स ऑनर, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लगाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रियली सेपरेट और सेग्रीगेट कि कहां पे लगाएंगे और कहां पे नहीं लगाएंगे। तो जो चीजें देखो, ट्रीज ब्रांचेस, लेकिन हम ट्री की ब्रांचेस कहेंगे, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, हम ट्रीज ब्रांचेस नहीं कह सकते। द हिंज ऑफ द डोर कहेंगे, डोर्स हिंजेस नहीं कह सकते। सो ये हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, जो वर्ड्स चाहे वो सिंगुलर नाउन के हो चाहे वो प्लूरल नाउन के हो, जो हिसिंग साउंड से एंड होते हैं, रिमेंबर हिसिंग साउंड से, उनके आगे हम अपॉस्ट्रोफी खाली लगाते हैं, एस नहीं लगाते। जैसे जैसे हम कहें जस्टिस, फॉर जस्टिस सेक, नॉर्मली हम ये यूज करते हैं जैसे, तो हम यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, क्योंकि जस्टिस में ऑलरेडी है। सॉरी, दूसरा होगा कॉन्शियंस सेक, तो कॉन्शियंस आता है तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। क्लियर? ऐसे ही हमने आपको पहले बताया था, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, तो ये नाम है डेनिस। अब डेनिस का डॉग, डेनिस डॉग, क्योंकि डेनिस ऐसे एंड होता है तो हमने यहां पे एक्स्ट्रा एस नहीं लगाया, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाई। इज दैट वेरी क्लियर? देखिए, ये आप अगर समझेंगे तो प्रॉब्लम, अगर नहीं समझेंगे तो आप कई जगह प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज यहां पे कहां पे लगानी है और कहां पे नहीं लगानी है। अभी मैंने आपको समझाया, जैसे लेडीज, अब लेडीज सिंगुलर, लेडीज इज प्लूरल, तो लेडीज, लेकिन एस आ गया तो इसके खाली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये हमारा हो गया, अपॉस्ट्रोफी भी हो गया। नाउ आई नीड टू रब द बोर्ड because we are going to start commas. Now we come to commas. Now, commas just do not signify pauses. वो सिर्फ रुकावट के लिए नहीं है, रुकावट की खेद है इसके लिए नहीं बने हुए वो पॉजेस, उनके प्रिसाइज रूल्स हैं। तो आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको कॉमा की इंपॉर्टेंस का समझ में आएगा। देयर आर एग्जैक्ट रूल्स के कहां पे लगना चाहिए और कहां पे लगना नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू डायरेक्ट टू यू ऑल द रूल्स रिलेटिंग टू दिस कॉमा हियर। नाउ वी must use a
comma. We use a comma before a coordinating. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई एम श्योर आप लोगों ने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं यहां लिख ही देता हूं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनसे पहले हमें कॉमा लगाना अनिवार्य है, आपको लगाना ही चाहिए। नाउ वेन एवर यू टॉक ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने आपको मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज सबके बारे में बताया है। तो वेन एवर वी स्टार्ट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन बिटवीन द सेंटर, in between a sentence, we should start it with a comma, first comma, like it has been raining therefore the teacher has not come. Now एक क्लॉज है it has been raining और दूसरा क्लॉज है therefore the teacher has not come. Sorry, the teacher has not come. The teacher has not come is the main clause. It has been raining therefore the teacher, तो हमें कॉमा यहां लगाना चाहिए क्योंकि यहां हमारा डिपेंडेंट क्लॉज एंड हो गया। और अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज शुरू करते हैं, लेट्स से हम डिपेंडेंट क्लॉज परमानेंट मेन क्लॉज के बाद लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद लिखते हैं, लाइक आई शैल गिव हिम द मनी इफ आई मीट हिम। नाउ अब आई शैल गिव हिम द मनी, ये तो हो गया परमानेंट क्लॉज और द मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इफ आई मीट हिम इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इससे पहले हमें यहां पे कॉमा लगाना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम सॉरी आई हैव टू रन। वी ऑल्सो यूज we also use commas to mark off appositives. Now remember, ये appositives क्या होते हैं? Appositives means writing something more to clarify what it is. इसलिए हम उसको appositives कहते हैं। तो appositive को mark off करने के लिए इससे पहले और इसके बाद में comma यूज करना पड़ता है। For example, I saw a mallard, a kind of duck. अब मैंने देखा I saw a mallard. Now और आपको बताने के लिए कि क्या mallard क्या होता है, it is a kind of duck, तो मैंने यहां पे कॉमा लगा दिया, यहां फुल स्टॉप लगी है। दूसरे आप और एग्जांपल बताता हूं। Bill Gates, the benevolent, has donated billions of dollars
नाउ अब हमने क्या किया, हमारा अपोजिटिव कहां पे है, बिल गेट्स तो नाम है। अब बिल गेट्स की क्या खासियत है, ही इज द बेनेवलेंट, दिस इज द अपोजिटिव, वो डिफाइन कर रहा है कि बिल गेट्स क्या है। ऐसे ही हम कह सकते हैं द लेट गांधी। अब आई एम ओनली टेकिंग, आई एम नॉट राइटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, बट गांधी क्या है, लेट है, मर चुके हैं, ही इज नो मोर, तो हमने द लेट लगाया। तो दैट इज द यूसेज ऑफ द अपोजिटिव्स। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? नाउ वी ऑल्सो यूज कॉमर्स टू मार्क ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, आइटम्स इन अ सीरीज। जैसे ये बड़ा छोटा सा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, आई एट अ banana, an apple, a pastry, and a slice of pizza. इतनी सारी चीजें आपने खाई, लेकिन ये सेपरेट करा बनाना, एप्पल, पेस्ट्री, और लास्ट आइटम से पहले हमने लिखा एंड। इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया। ठीक है, अब एक मिनट फिर थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूंगा। फिर वी ऑल्सो यूज अ कॉमा, क्या है, वी ऑल्सो यूज अ कॉमा व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब। ओके, फॉर्चुनेटली, कॉमा, no one was hurt. So we began our sentence with an adverb, therefore we need to separate it from the rest of the sentence. Again, another thing is, she as usual danced Now here, this as usual is used as an appositive to she, right? Another thing, yes, we must always separate or segregate a name to whom we are talking about or whom we are talking to before or after the sentence, or even in between the sentence. I'll give you examples to make it very clear to you. Mary, come in at once. Now, Mary is a name which has been segregated by a comma and then the rest of the sentence. We can also say, everyone except Harry paid the fee. Now again we are talking about Harry, so we put a comma here and we put a comma here to segregate the name, right? Now again, nature's call affected the sociologist Mr. Alpha. Sociologist. So now, nature's call affected the sociologist Mr. Alpha. Now, Mr. Alpha is a name, therefore we segregated it with a comma and after that a full stop. So that is how you use a comma. Is that clear? Now, after all these things, we have come to, we use commas in addresses. But I am not going to tell you about that at addresses
Because nowadays the addresses are either too complicated or too simple to write, use commas. And even in the 12th class, when you are asked to write a letter and the format is given to you, there's no room for a comma in the addresses. So there's no point in telling you about that. I've told you about adverbs. Yes, one more thing that is left for commas. We use commas before and after we attribute a quotation. Right? Now let's say, I'm not really certain about who said what, but it has been known that Shakespeare said to be or not to be is the question that faces us now. Now, the quotation is to be or not to be. इसके लिए पहले हमने कॉमा लगाया यहां पे, इसके बाद में नॉट टू बी के बाद सॉरी कॉमा नहीं लगाया, यहां भी कॉमा लगाया, और यहां पे हमने ये लगाया कोटेशन. कोटेशन के लिए सिंगल कॉमा जो लगाते हैं, ये कॉमा ने सेग्रीगेट किया इसको कोटेशन को, और ये बताया कि ये दिस इज नॉट आवर नॉर्मल लैंग्वेज, बिकॉज शेक्सपियर ने कहा था टू बी और नॉट टू बी. Now that is a very famous clause of Shakespeare, quotation of Shakespeare, and it's pretty often used. तो आपको इस तरह के quotations जब यूज करने पड़े, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. All these things, people say these things, and you note them, and when you speak, you refer to them, you allude to them, and when you allude, you need to, if you are writing, of course, then you have to use a comma. Please. I think with that, I end my class on punctuation. Thank you very much.